So today our topic is current electricity. First, all of you give the heading as charge. Right, first you give the heading as charge. Right, there are two kind of charges. Bit 1 positive charge, bit 2 negative charge. Right, the body which gains electrons becomes negatively charged. The body which gains electrons becomes negatively charged, and the body which loses electrons becomes positively charged, and the body which loses electrons becomes positively charged. Okay. Next you write concept of current. It is defined as the rate of flow of charge per unit time. Rate of flow of charge per unit time. Full stop. Right, it is a scalar quantity. उसके नीचे लिखो the direction of current gives us idea, or you write the direction of current gives us idea about the movement of electrons. Okay, so I'll be explaining you this right now. So current electricity is our topic. Okay, so what we'll be doing here, सबसे पहले I said you about what? Charge can be two things. It can be positive charge, it can be negative charge. But जो भी होता है we do with respect to electrons. Positive क्या करता है तुम्हारा? Loses electron and it gains electron. Electron का charge कितना होता है? -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. This is the charge of an electron, any electron. And जितने भी तुम्हारे exchanges होते हैं that is in the form of electrons only. कभी कभी तुम्हें दिया रहता है 1 माइक्रो कूलम एंड इसका एसआई यूनिट याद रखो. चार्ज एसआई यूनिट इज व्हाट? कूलम. COULOMB कूलम. ओके, 1 माइक्रो कूलम इज 10 to the power -6 कूलम. 1 milli coulomb 10 to the power -3 coulomb. So these are the units which you have to remember. After that I explain you current. Current क्या था? Current is represented by I and it is the rate of flow of charge. Rate का मतलब by time. तो charge by time, Q by T. So it can be written as what? Charge by time. मैं कोई भी चीज का रेट बोलता हूँ, जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ पेंसिल, तो पेंसिल बाय टाइम. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस चार्ज बाय टाइम. ओके, तो करंट का एसआई यूनिट इज व्हाट? एम्पियर. करंट एसआई यूनिट इज व्हाट? एम्पियर. सो आई कैन राइट 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड. So whenever suppose someone will ask you define 1 ampere. So what I can say, when a charge of 1 coulomb flows through a conductor in 1 second, current is said to be 1 ampere. 1 ampere. So this is how I define current. Understood? अभी इसमें भी, but all of you know this current is a scalar quantity. This is what actually a scalar quantity. But बहुत बार हम लोग direction बोलते हैं ना, current is flowing in this direction or that direction. How it is represented? Suppose this is a conductor. ये conductor है. Suppose this is a conductor. If electrons are flowing from this part to that part, means left to right, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर लेफ्ट टू राइट है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
हमेशा याद रखो डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to the direction of flow of electrons. Are you understanding? हमेशा इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट इस तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होता तो करंट किधर होता है. तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज स्केलर क्वांटिटी. दैट्स आफ्टर दैट आल्सो I made you write the direction of current is actually used to get to know the direction of flow of electrons. If the direction is given this side, then electrons are going that side. So direction का उस चीज के लिए होता है. Apart from that, it is a scalar quantity. Only its magnitude makes sense. Clear? So this is all about current. And here also someone can say if 1 microampere is given, 10 to the power minus 9 ampere. 1 milliampere is given, 10 to the power minus 3 ampere. If it is given nanoampere, so 10 to the power minus 9 ampere. So this can be written, but nano does not come. Milli and micro में सारा representation होगा. ठीक है? Right. So next, if I am writing here, if n number of electrons are flowing in time t, n number of electrons are flowing means total charge will be how much? एक इलेक्ट्रॉन होता है तो E. If n number of electrons are there means n into E. This will be the total charge. अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो E, but n number of electrons that's Ne. And time is how much? T. So what will be the current? Current is what? Q by T. That is what? Ne by T. In most of the times, if it is saying we are talking about 1 coulomb, ठीक है ना? 1 ampere is equals to 1 coulomb per 1 second. But 1 coulomb होने के लिए you need n into E. क्योंकि charge 1 coulomb है तो n into E. 1 coulomb is how much? N into E is how much? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So if I need to find out n, फिर क्या हो जाएगा? 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19. So here n is equals to come. It will come if you solve the 6.25 into 10 to the power 18. So to constitute 1 coulomb charge, how many electrons should flow? 6.25 into 10 to the power 18. So 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons constitute what? 1 coulomb of charge. Okay, so this is the basic idea about how do we relate number of electrons with current or else charge. Okay, and next heading you give potential difference. First you write this and then you give heading potential difference. Next you write heading you give concept of potential and potential difference. Concept of potential and potential difference. Concept of potential and potential difference. First you write potential. Potential though heading, right? Potential at a point is defined. Potential at a point is defined as the amount of work done. Potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge. Is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Written potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. So if I make you understand also, so how it is being understood, potential at any point P is defined as the amount of work done. Wait a second, on नहीं है वो बैटरी से वो कुछ आया क्या? on है तो ऑन है. potential at any point P is defined as the amount of work done in bringing from infinity to that point. Infinity is that point of that charge. So कोई भी charge होगा, test charge, unit positive charge. Suppose I am talking about P. एक छोटा सा positive test charge है Q naught. Suppose this is at infinity. From there I have to bring it here. मुझे यहाँ से यहाँ ला के रखने में the amount of work done per unit charge is known as per unit test charge. So Q naught is what? Test charge. Okay, and W infinity to P means the amount of work done in bringing it from infinity to that point. So बहुत बार लिखा रहता है हम लोग Mach. The technique is V equals to W by Q. VW क्या होता है Mach? A dog barks
उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देना तो तुम्हें तुम्हारा फॉर्मूला मिल जाएगा. सो वोल्टेज 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 कूलम. सपोज कोई बोल रहा है डिफाइन 1 वोल्ट. सो व्हाट आई राइट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी, potential at a point is said to be 1 volt. Okay, when 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge from infinity to that point. Understood? Potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point. Easy to remember? Okay, so write it down. Next we'll study about potential difference. Okay, potential difference between 2 points. Potential difference between 2 points. Suppose बात हो रहा है. So potential difference between 2 points मतलब suppose एक point है A और एक point है B, तो हमें चाहिए VA minus VB. So potential difference between 2 points refers to the work done in bringing a unit positive charge from point B to point A. So यहाँ से यहाँ लाने के लिए जो work done होगा, it refers to the work done in bringing a charge. समझ रहे हो ना? अभी देखो तुम्हें मैं एक सिंपल सा बात बताता हूँ. Suppose मुझे B से A लाना है. पोटेंशियल देख लो, तुम्हें कोई भी चार्ज को लाना है तो बाई क्यू तो करोगे. सपोज दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, बेसिकली समझो. पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, खुद से कैसे जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की लो टू हाई. पॉजिटिव किधर जाना चाहिए, हाई टू लो जाना चाहिए. समझ रहे हो? क्योंकि हाई पोटेंशियल मतलब ऑब्वियसली वहां का पोटेंशियल हाई है, तो कोई पॉजिटिव चार्ज कहां से ऊपर से नीचे आना चाहिए. पानी भी कहां से कहां फ्लो करता है, high level to low level. So any positive charge wants to come from high potential to low potential. मान लो A का potential is greater, VA is greater than VB, तो चार्ज को कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, A से B. बट हम लोग B से ला रहे हैं तो हम लोग को काम करना पड़ेगा कि वो खुद आ जाएगा. जैसे कि पानी ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आता है, बट नीचे से ऊपर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो VA minus VB is equals to the work done in moving it from B to A by for any unit positive charge. तो सिंपल ही है, V is equals to W by Q, but VA minus VB will be the work done by the net charge. तो कभी-कभी बोलता है define potential difference of 1 volt. Define potential difference of 1 volt. So what do we say? Potential difference is said to be 1 volt between 2 points if 1 joule of work is said to be done in moving 1 coulomb charge from one point to another. Understanding? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. पॉजिटिव चार्ज जनरली positive charge easily flows from high to low, from high potential to low. But when we have to move from low potential means LP to high potential, work has to be done. Understood? Clear or any doubt? Now let us understand the concept of resistance. Concept of resistance. Suppose I am having any random conductor. पहला बात समझो, ये कंडक्टर है, थोड़ा डेप्थ में समझो इसको. Suppose this is some conductor, okay? Now any conductor is any metal, and metal has what? Atoms. Atoms होते हैं उसमें. So whenever any atoms lose electrons, तो atom के ऊपर क्या आ जाएगा? Positive charge will come. If any atom is losing an electron, it will have a positive charge. So it gives rise to electrons free to move
and these are what? Positive ions. Positive ions unable to move. Obviously ions cannot move, but electrons can move. Ions को electrolyte चाहिए होता है move करने के लिए. But when you are having a conductor, it is in which state? Solid state. कभी भी solid state में ions move करता है क्या? नहीं. Ions can move only in electrolyte. जैसे कि पानी मिला दिए, तो it forms Na+Cl-, तो ions move कर सकता है. या तो aqueous state में, molten state में they can move. अगर molten है तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. Or else positive ions are unable to move, electrons are free to move. तो कोई भी कंडक्टर के अंदर चला लॉट ऑफ पॉजिटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस को मैं ऐसे प्लस करके रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रिप्रेजेंटेड एज प्लस. बहुत सारा होगा. एंड देयर विल बी लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो. इलेक्ट्रॉन्स भी तो आए हैं. देयर विल बी लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो. क्लियर? देयर विल बी लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो. So now what happens when this is connected to any potential difference? Suppose मैं कोई external source of battery के साथ connect करता हूँ. Positive terminal is connected here, negative is connected here. Okay, the bigger one, ऐसे कोई भी cell is represented by this. So this is what? Positive terminal. घर में तो बैटरी देखी होगा. And this is what? Negative terminal. बैटरी के दो ends होते हैं, positive and negative. Suppose positive is connected here, negative is connected here. Positive से हमेशा क्या निकलता है? Current. Current flows in this direction. तो current will flow in this direction. This means electrons किस तरह move करेगा? Opposite. So when these electrons try to move, ये positive ions तो move नहीं कर रहे. They are unable to move. They are fixed. When electrons will try to move, positive ions will come in between them and they will strike with it. तो मैं step wise लिख रहा हूँ. Electrons starts what? Drifting. Electron starts drifting inside conductor in opposite direction of what? Current. In opposite direction of current. While drifting, they undergo what? Several collisions. While drifting, they undergo several collisions with whom? With stationary positive ions. Stationary मतलब move नहीं कर रहा है. Stationary positive ions. Okay? जब वो जा रहे हैं, they undergo several collisions with stationary positive ions के साथ वो collide करते हैं. And as because of that they lose their kinetic energy and they lose what? Kinetic energy. तो जो भी हो when electrons are flowing there is some obstruction or not. देखो बाहर में तो करंट आ जा रहा है आराम से, बट ये अंदर में इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रॉपर्ली नहीं जाएंगे तो तुम्हारा करंट जितना होना चाहिए उतना होगा क्या? नहीं. करंट क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज ये तो टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे ना. अगर एक पाइप है, सपोज यू थिंक देयर इज अ पाइप, इफ देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर देन यू गेट अ यूनिफॉर्म थ्रो. But if there are a lot of oppositions or obstructions offered by the conductor, then what will happen? Water cannot easily pass. That kind of a concept we are using. So when there are so many obstructions, they are losing kinetic energy. Kinetic energy lose करने से वापस वो लोग क्या करते हैं? जीरो से स्टार्ट करेंगे. Suppose तो ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, स्पीड बढ़ रहा है इसका, because we are applying an external potential difference. बैटरी का काम क्या है? They provide external potential difference. बाहर से पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिए तो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के चलते इलेक्ट्रॉन जा रहा है. कब तक होगा? इमीडिएटली स्पीड बिकम्स व्हाट? जीरो. जीरो होते ही फिर से वो साइड होके जाएगा. ड्रिफ्ट. जैसे कहीं पे तुम जा रहे हो, एक्सीडेंट होता है तो व्हाट यू डू? साइड होके वापस जाते हो. साइड होके फिर से जीरो से तुम्हारा स्पीड होगा, बढ़ते बढ़ते जाते जाते फिर से कोई पॉजिटिव आ गया, फिर से टक्कर, फिर से क्या हो गया? जीरो. फिर साइड होके गए, फिर बढ़ा, इस तरह का. तो द एवरेज ऑफ ऑल दिस वेलोसिटीज इज कॉल्ड व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये सब जो जितने भी वेलोसिटीज होंगे ना, v1 मान लो v2 अप टू vn by n is equals to vd, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इट इज कॉल्ड व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. And these electrons which are easily available to move, they are called what? Free electrons. So what I can write if someone asks you what are free electrons? The electrons freely available to move are called the electrons inside conductor freely
to move are what? Free electrons. समझ रहे हो? And these are the positive ions. तो इन सब के बाद ये जो opposition होता है, that is actually what? Resistance. This is actually what? Resistance. When they collide, and this is actually resistance. So whenever someone asks you what is resistance, so it has got a simple meaning: the obstruction offered by a conductor to the flow of current in a conductor is called resistance. The obstruction offered by a conductor to the flow of current. Current के flow को जो obstruction offer होता है, that is known as your resistance. Am I clear to everybody? Right. Now, basically, on what resistance depends on? Resistance basically depends on एक ही पैरामीटर होता है, number of collisions free electrons had with positive ions. Number of collisions free electrons had with positive ions. जितना ज़्यादा collision, if number of collision is high, then resistance is also what? High. समझ रहे हो? ये ज़्यादा है तो definitely resistance भी क्या हो जाएगा? काफी ज़्यादा हो जाएगा, because they are proportional thing. But जब हम लोग पैरामीटर वाइज लिखते हैं, the formula of resistance is actually what? R equals to rho L by A. R का फॉर्मूला क्या होता है? Rho L by A. So resistance जब depends on पूछ रहा है, resistance depends on four things. Bit one is nature of material. Second is your length. तीसरा है लेंथ ऑफ कंडक्टर. थर्ड इज योर दिख रहा है ना एरिया ऑफ कंडक्टर. एंड फोर्थ इज योर टेम्परेचर. तो R इक्वल्स टू रो एल बाई, ये जो फॉर्मूला लिखते हो, वेयर रो रिप्रेजेंट्स व्हाट? रेजिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है. जैसे कि एल्यूमिनियम, बड़ा एल्यूमिनियम लो, छोटा एल्यूमिनियम लो, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा. इंडिया में एल्यूमिनियम लो, यूएस में एल्यूमिनियम लो, तो रेजिस्टिविटी सेम होगा. रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम फॉर सेम मटेरियल. It remains same for same material. And you know L is your length of the conductor and A is your area. अगर डायग्राम में दिखाऊं तो the length is considered as L and this area is considered as A. Okay, ये चारों पे डिपेंड करता है, बट कैसे करता है वो सबसे पहले. तो सबसे पहला पैरामीटर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट? नेचर ऑफ मटेरियल. तो लेट मी एक्सप्लेन. नेचर ऑफ मटेरियल में जैसे क्या होगा? सपोज आई एम टेकिंग हियर फ्यू एग्जांपल्स लाइक एल्यूमिनियम, like silver I can take, lead I can take. So these all I am taking. And दूसरी जगह में I am taking rubber, wood, plastic. Rubber, wood, plastic, these all things I am taking. So these all are actually pure conductors. तो इसमें क्या होता है? They have high concentration of free electrons. High concentration of what? Free electrons in them. अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, डेफिनेटली नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी व्हाट? हाई. नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होगा? ज्यादा. अगर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेगा तो ज्यादा टक्कर होगा ना. अगर रोड पे ज्यादा गाड़ी चलेगा तो ज्यादा एक्सीडेंट होगा कि नहीं. सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, दैट्स व्हाई. एंड हियर नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए कोलिजन इज आल्सो, कोलिजन भी क्या है? नील है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट? इंसुलेटर्स. इनको क्या बोला जाता है? इंसुलेटर्स. एंड दीस आर कॉल्ड कंडक्टर्स. तो नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर हाई रहेगा तो दैट इंप्लाइज व्हाट? रेजिस्टेंस इज आल्सो हाई. अगर कोलिजन ज्यादा है, इट इंप्लाइज व्हाट? रेजिस्टेंस इज आल्सो हाई. बिकॉज़ आई हैव सेड हियर, इफ नंबर ऑफ कोलिजन इज हाई, then resistance is also high. That implies resistance is also high. तो यहाँ पे कोलिजन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, वहाँ पे कोलिजन ही नहीं है तो रेजिस्टेंस क्या है? पहला बात है, कोलिजन होने से पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो नहीं है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा. नो मूवमेंट मींस नो कोलिजन. तो वहाँ पे रेजिस्टेंस इज व्हाट?
सी इट इज हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूवमेंट करेगा तो डेफिनेटली और करंट विल बी व्हाट हाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूवमेंट करेगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा ना, सो करंट विल बी हाई एंड रेजिस्टेंस विल बी लो, and here negligible concentration of free electrons means there will be no current at all, no current means what, definitely the resistance is very high, that's why there is no current, current नहीं आ रहा है, लास्ट वाले पॉइंट को तुम एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना, here we have to see means the number of charge carriers is predominant over the collisions, क्योंकि ये भी तो है ना कि करंट कैसे बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तभी करंट फ्लो करेगा, तो कोलिजन तो हो ही रहा है यहाँ पे, बट व्हाट इज प्रीडोमिनेंट, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इज प्रीडोमिनेंट हियर, सी इफ कोलिजन्स आर मोर देन रेजिस्टेंस विल बी हाई, बट बिकॉज़ हियर द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर आल्सो मोर, दिस मींस द करंट इज मोर एंड रेजिस्टेंस इज लेस एंड वाइस वर्सा. सेकंड डिपेंडेंस इज ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर. As all can see, R is directly proportional to L, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, R equals to rho L by A, तो directly proportional to it, but I explain you via collisions. If the length is long, number of collisions will be, if length is long, then what, number of collisions will be what, higher. ज़्यादा लंबा है तो एक्सीडेंट, फिर से एक्सीडेंट आ गया, फिर एक्सीडेंट आ गया, होते होते जाएगा कि नहीं, number of collisions will be more, and if number of collisions will be more, then resistance will be automatically what, less, because collisions and resistance is what, sorry, resistance will be directly proportional, है ना, तो resistance will be more, number of collisions are more means the resistance will be also higher, ठीक है. Third comes your area of conductor. सीधा सीधा समझो यार, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है मतलब रुकावट ज्यादा है, ऑब्स्ट्रक्शन इज मोर, दैट्स व्हाई. If we see the area, तो यहाँ से दिख रहा था पाथ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया. ओके, एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सपोज यू आर हैविंग एरिया मोर, सपोज द एरिया इज वेरी मच, काफी ज्यादा है, तो इफ द एरिया इज मोर यू कैन इजीली ड्रिफ्ट एंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी ऑटोमेटिकली लेस, बिकॉज़ देखो ज्यादा स्पेस है. इफ यू आर हैविंग अ ब्रॉड हाईवे and the number of trucks or cars which are flying on the road, whatever the amount may be, if the highway is high, accidents will be automatically what, less. So if the path is area is higher, then number of collisions is automatically what, less, and as a result of that resistance is also less. तो घर में generally wiring के time main wire जो होता है काफी मोटा use करते हैं हम लोग. If you use a thicker wire, the resistance will be less and more current can come to your house and all appliances will be working properly. And the fourth one is temperature. When I am increasing the temperature, if temperature increases, what happens? You just understand. कोई भी चीज को गर्म करते हो तो it starts vibrating. So electrons starts what? Motion, random motion बोल सकते हो. Random motion. Because the temperature is higher, random motion because kinetic energy increases. So when it starts vibrating more, the number of collisions will be what, more higher. अगर वो खुद से ही हिलने लगेगा तो ज़्यादा टक्कर करेगा कि it will cover up more area, it will hit this also. तो मूव कर करके अगर गाड़ी चला रहा है तो इधर उधर सब तरफ टक्कर होगा कि नहीं, तो number of collisions is higher means resistance is also higher. But it has got a formula. R at any temperature T is equals to R at 0 degree centigrade into 1 plus alpha into delta T. So we write this formula. R naught is what, resistance at 0 degree centigrade. Resistance at 0 degree centigrade, and alpha is equals to what, temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance. Okay, and you understand one more part is also here, delta T is equals to change in temperature. Delta T is what, change in temperature. सपोज तुम्हें पता करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो रहा है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 50 माइनस 0. आई अंडरस्टैंड कितना चेंज हुआ. 0 डिग्री में आर नॉट था तो 1 प्लस अल्फा इनटू 0 डिग्री से कितना बदला, अगर ये 100 डिग्री पे निकालना है तो 100 माइनस 0. अंडरस्टैंड. So this is how we find, this is the formula.